So this is your third assignment, which has a due date on 11th December, where you are going to submit the soft copy on Google Classroom by 7 p.m. Right? The time will be mentioned there. 7 p.m. के बाद वो portal available नहीं होगा, and there will be no submission. Then 12th December को hard copy आप class में लाएंगे, right? Now your assignment has two parts. Each part contains the same category of mark division, that is 2.5 marks. First part, look at the first part, look at there please. Write an argumentative essay on the given prompt. Your prompt is, does AI technology and its utility in education system help the students become more competent or not? You will have to take a stand. एक perspective लेना होगा, या तो आप इससे agree करोगे या आप इससे disagree करोगे, right? Agree करोगे तो उस तरह के arguments होंगे, disagree करोगे तो उस तरह के arguments होंगे. Argumentative essay में we have established the fact that we are going to have 6 paragraphs. First is the introduction, last is the conclusion. Then we have 3 body paragraphs claiming or explaining the claim with the reasoning, and the second last paragraph will be the counter argument. Maybe the other people think that it is making you a little stupider, so वो उस perspective को आप लाएंगे. इसमें statistics, उसमें real life examples, वो सब कुछ होना mandatory है. You are going to write 250 to 400 words. अगर इससे आगे भी हो जाए तो there is no harm in that, it's fine, but it should not be less than 250 words, right? And it contains 2.5 marks. इस writer के, इस drafting के 2.5 number है. Second part is the most important part, in which you are going to carry out an analysis of your own write-up. जो आपने लिख लिया है उसका analysis करना है. कैसे करना है? यहाँ पे एक example attached है, जो भी हम discuss भी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है? You are to write your essay first and analyze it like the analysis attached and discussed in the classroom. So this part, identifying the parts and doing the analysis of your own write-up, carries 2.5 marks. Half marks इस चीज़ के है, इसको माइंड में रखें. अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे attached है, देख लें इसको. This is the analysis that I'm talking about. This is one sample. ठीक है? This sample can be followed. Exploring the typical features and structures of an argumentative essay with a sample example. This is the document. आगे देखें, diversity, help or hindrance to group performance. Diversity simply means having diverse thought processes, the way you think. Maybe the way Shahriyar thinks is absolutely different than that of Muhib's. दोनों का सोचने का तरीका, approach to life, approach to any incident or situation would be different. एक को डांट पड़ती है तो वो दिल पे लेके बिस्तरे में जाके रोता है. The other one is like, I'll correct myself. ठीक है? Two diverse kind of reactions would be there. Help or hindrance in group performance. अब हमने diversity को group performance में देखना है. Group performance is, a group is a team in which you could have 2 or more people. ठीक है? ग्रुप कैसे होता है? जैसे ये 3 बच्चे हैं, इनका एक ग्रुप है. अब ग्रुप परफॉर्मेंस में डाइवर्सिटी इम्पैक्ट रखती है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? रखती है. डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है ना. राव थिंक्स डिफरेंटली, अम्बरीन थिंक्स डिफरेंटली, एंड रुबाब हैज अ डिफरेंट अप्रोच. अब ये तीनों ने एक परफॉर्मेंस देनी है, एक ग्रुप परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन तीनों के सोचने का तरीका, एग्जीक्यूशन का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका एक दूसरे से डिफरेंट है. तो योर स्टैंस शुड बी आइदर इट डज इम्पैक्ट और इट डज नॉट. ठीक है? सो आप कौन सा स्टैंस लेंगे? पढ़ने से पहले आप बताएं, आप कौन सा साइड लेंगे? क्या ये इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है. व्हाट अबाउट वजाहत? डज इट इम्पैक्ट? डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस? हाँ. You don't think so? Now, if you're saying that, you should have some reasons for that. Can you tell us 1 or 2 reasons for that? अब आपने इसको justify करना है ना, इसके बारे में argument करना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता. कैसे नहीं पड़ता? Tell me that. उधर से मत पढ़े, वो तो लिखा ही हुआ है, अपना बताएं. Okay, fine. जी अली, any point of view? बताएं. So you don't have a point of view, that's all right, because the topic that has been assigned to you, you must have a point of view regarding that, because that is related to your
field, AI technology, does it help the students or does it make them a little stupid? You will take the stance. मेरे ख्याल से तो second वाला है, but I would really like you guys to try with the first one, that it makes you more competent, it makes you more competitive in nature. ठीक है, अब analysis की तरफ चलते हैं. Let's see what the author has to say. In an increasing complex and competitive business world, how is a company to generate the creative ideas needed for ongoing success? Many managers believe that forming teams with cross-functional diversity is the answer. So in the very first sentence, we get to know that the author of this essay is going to back up to the claim that it is important to have a diverse background knowledge in a team or a group of people. The reason, because what Rao brings to the table is going to be different what वासे brings. अब वासे किसी और तरह सोचता है, मे बी वो टेक्निकल है और राव जो है वो ज़्यादा ऑडियंस ओरिएंटेड है. तो दोनों के पॉइंट्स जब आगे आएंगे तो वो जो एक प्रोजेक्ट बनेगा that is going to be more effective. So perhaps you can change your point of view right now कि yes, it does have a positive impact, not the negative one. आगे देखें. However, while diversity in group membership may lead to the diversity of ideas needed for innovative problem solving, it is argued here that the managers need to be aware that there are many ways that diversity can, in fact, hinder team performances. Now they have given the other perspective as well. Argumentative में यही होता है ना, black and white. Either it does impact or it does not. And you're supposed to come up with both perspectives. ठीक है? Though there are strategies that both teams and their managers can use to reduce the potential negatives and enhance the potential positives. So this particular argumentative essay is going to talk about both positives and negatives side by side. There are many ways to approach an argumentative research article or essay for that matter. One of those is going side by side. First you say something and you refute that then and there, and then you move forward. The other could be पहले आप 3 points लिखें और एक ही दफ़ा refute करें. अब आप देख सकते हैं कि 7 boxes बने हुए हैं. यहाँ टॉप पे लेफ्ट साइड पे कॉन्टेक्स्ट दिया गया है. कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड विच प्रोवाइड्स द मोटिवेशन फॉर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो द टॉपिक हैज़ बीन गिवन टू यू. यू नीड टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टेक्स्ट इन फर्स्ट फ्यू लाइन्स और उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉन्टेक्स्ट कौन सी लाइन्स कन्वे कर रही हैं. दूसरी साइड पे देखें थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट के बारे में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट. सो थीसिस स्टेटमेंट आपके पहले पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में नहीं, आखिरी 2-3 लाइन में होना चाहिए, जैसे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ. देखें thesis statement, the overall claim that will be defended with evidences and reasoning. In argumentative writing you must have evidences to your claim and reasoning. अगर आप कह रहे हैं कि diversity required नहीं है तो क्यों नहीं है, और उस क्यों को आंसर देने के लिए आपके पास क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई स्टोरी, कोई स्टैटिस्टिक, कोई सर्वे, कोई इस तरह की चीज़ है जो उसे बैक इट अप करे, वो होना लाजमी है. ठीक है. उसके बाद a good thesis statement implies a structure. In this case there are explanations of the ways that different types of diversity can negatively impact the management, and followed by an explanation of the strategies that teams and their managers can actually employ into their offices in order to have a productive environment. ठीक है, इन 2 चीज़ों की बात होगी. थीसिस स्टेटमेंट में 2 चीज़ें क्या है, एक है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो वो लेकर आगे चल सकते हैं. Now I understand the English written over here is a little dense, which is not for your liking, or it's not your cup of tea. I expect you not to write like this, but write clearly with basic English with no grammatical or tensile mistakes. That's fine. आप जितना simple लिखते हैं that's even better, लेकिन उसमें टेंस मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कॉपी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए. ज़रूर पढ़ें, जहाँ मर्जी से पढ़े, पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में लिखें. इट्स इम्पॉर्टेंट. अब देखें अगला पैराग्राफ देखें. असाइड फ्रॉम द क्रॉस functional diversity, many other types of diversity can have effect on team performance, and some of these types of diversity can have inherently negative effects. ठीक है. अब आपको बोल्ड में जो चीज़ नज़र आ रही है, जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वो है
दैट्स अ टॉपिक सेंटेंस. इसी तरह आप भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हर पैराग्राफ में आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है. यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब जो एग्जाम्पल है दैट इज द एविडेंस, दैट इज द रेफरेंस मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट वेरी स्ट्रेंथन एंड strong for the audiences to understand. For example, any negative stereotyping by group members resulting from diversity in terms of gender, age or ethnicity will reduce team social cohesion and hence group performance. Social cohesion ये होता है कि if I am from a lower middle class and my group members are from elite class, they can show off things that I do not possess. That will definitely create hindrance in my understanding of the environment. मेरे पास नहीं है, मैं भी उसके लिए मैं इतना परेशान रहूँ कि जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो हो ही ना सके, मैं कुछ डिलीवर ही ना कर सकूँ. तो इन चीज़ों की बात हो रही है. आगे देखें, एज साइटेड इन एक्सेट्रा. नाउ दिस इज अ रेफरेंस. फॉर नाउ एट दिस लेवल यू कैन लेट द रेफरेंस गो. आप इसके अलावा क्लेम को रीजनिंग ही दे दें, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. लेकिन ये रेफरेंस देना अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि आप हवा में बात नहीं कर रहे. आगे देखें, कहोंगे because a certain amount of social cohesion has been found to be correlated with effective group performance, says Harrison. Other aspects of diversity such as attitude towards groups, tasks, in values and in time management style can also negatively affect group social cohesion and hence group performance. अब अगर आप इन सारी लाइंस को देखें तो वो अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हैं, वो क्या शोकेस करते हैं बताएं? एनालिसिस. ठीक है. दे आर प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स, दे आर प्रोवाइडिंग द रीजनिंग, हेंस प्रोवाइडिंग द एनालिसिस. आपके राइटअप में भी मुझे यही एनालिसिस चाहिए. ठीक है, जो आपने लिखा उसका एनालिसिस, नॉट जो सारी चीज़ें बेटा. टॉपिक सेंटेंस, एनालिसिस कहाँ है, इंटरप्रिटेशन कहाँ है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ है, एग्जाम्पल कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप बताओ. इसी तरह से बना लो. ठीक है. हाँ जी, एंड मैं आपको लिख कर भी दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम. आगे देखें. अब देखें अगला पैराग्राफ फिर एक टॉपिक सेंटेंस है वहाँ पर. व्हाट्स हैपनिंग? The sorts of diversity that are most likely to be beneficial. पहले हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात की, अब बेनिफिट्स की बात करने लगे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक सेंटेंस. टू ग्रुप परफॉर्मेंसेस सच एज डाइवर्सिटी इन relevant knowledge, experience and skills can unfortunately also cause problems for group performances. जो highlighted words हैं, bold में हैं, वो topic sentence का part है. You see, you can write a topic sentence in this manner as well, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही chunk में पूरा हो. topic sentence का बाकी ताल्लुक बाकी chunks के साथ भी हो सकता है. Okay. Having too many diverse views and opinions to coordinate can, for example, cause cognitive overload. अगर मैं culturally सिंधी perspective लाती हूँ, ये culturally बलोची perspective लाते हैं और एक बंदा पंजाबी लाता है. अब हम of course तीनों जो culturally different है, हमारे perspective, point of views, approach, tradition सब different है. अब हम ये तीनों चीज़ें अपने argument में present नहीं कर सकते. तीनों को करेंगे तो वो इतना haphazard और इतना ओवरलोडेड होगा कि समझ ही नहीं आएगा, कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं होगी. टेक वन बट जस्टिफाई इट कम्प्लीटली एंड करेक्टली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट कॉजेज कॉग्निटिव ओवरलोड अमंग ग्रुप मेंबर्स एंड सो impede its elements. Okay, I can read it from there. हम यहाँ से पढ़ रहे. Cause cognitive overload amongst group members and so impede its decision making processes, etc. etc. Now this is a reference कि ये लोग ऐसा कहते हैं. This is especially likely to be a problem when the team has a limited amount of time to complete the task. The cross-functional diversity mentioned above can also cause problems if, अब देखिए ये जो if word है, cause word है, ये हमें बता रहा है कि ये reasoning है. ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग है बिहाइंड योर क्लेम. इफ ग्रुप मेंबर्स हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज एंड वैल्यूज ऑफ ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज एंड देन देयर इज अ रेफरेंस. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बोल्ड में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है और आर्ग्यूमेंट को कर रहा है.
Note again how the writer has not simply said, for example, that having too many ideas can be problematic, but also explained why having too many ideas could be a problem. अब आपने लिख दिया कि too many ideas in one group can create a hindrance. How? You have to answer that as well. कोई भी चीज़ claim करे, claim के अंदर भी claim करे तो उसे justify करना important है. अच्छा आगे देखें. Now, given all above mentioned problem associated with diversity, are there strategies that a team and its managers can implement to reduce the potential negatives and enhance the potential positives? Now, the paragraph starts with another topic sentence, जो कि हम introduction में already establish कर चुके हैं. अब उसकी वो बात करेगा. Regarding cognitive overload, evidently a team needs to be given an adequate amount of time to complete its task. Scheduling frequent collaboration can also be used, etc. etc. Then आगे देखें, and since too much social cohesion can cause teams to avoid the robust. अब इस पैराग्राफ में it's a counter argument जो पीछे बात हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस वाले लोग इकट्ठे आ जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके लिए वो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है. Now in this paragraph, the topic of the paragraph is announced with the question rather than a claim, thus illustrating that there is more than one way to introduce the paragraph. It is not necessary कि वो बिल्कुल ही simple हो. In your case, I would highly recommend go for the simpler one. Do not start with the question because you won't be able to handle it. Make it as simple as possible. फिर आखिरी paragraph देखें ना. This sample has 4 paragraphs. I want you to write 6 paragraphs clearly indicating कि वो एक दूसरे से different क्या है. अगर आप 4 लिखना चाहें तो फिर उसकी evaluation different होगी, but it is for the good कि आप 6 ही लिखें. मैं वहाँ लिख देती हूँ so that everybody follows the same. In conclusion देखें. It appears that if managers wish to create especially effective teams, they should seek to minimize diversity. Now it has been concluded, it has been evaluated, analyzed, interpreted and explained in the argumentation कि जितनी diversity है उसको कम करेंगे उतना अच्छा है. They should seek to minimize diversity in terms of task and time management values while looking to maximize differences in relevant knowledge and skills. They should further aim to foster as much collaboration as possible to develop social cohesion and foster psychologically safe environment for the etc. etc. Now this is your sample, ठीक है. आपको इसी तरह से अपने में भी अपने ऐसे में भी आइडेंटिफाई करना है. नीचे रेफरेंसेस दिए हुए और स्ट्रक्चर की बात भी की हुई है. अगर आप लिख रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं. Now that's all about your third assignment. Now if you have any question regarding your third assignment, please go ahead and ask.